So last time we were looking at the potential energy. Okay, you had your first proper encounter with the idea of this potential energy. That given a conservative force, and what's a conservative force? Conservative forces are those forces for which the work done depends only on the initial point and the final point. It does not depend on the path taken. It does not depend on how you took your particle from point A to point B. As such, the work done by a conservative force in taking a particle from point A to point B can be written as the difference in the value of a function calculated at point A, calculated at point B. Okay. So in other words, you write this as some function calculated at point B. This function is a function of position. You calculate it at the position vector of point B minus the position vector at point A. By convention, instead of doing this, it's a convention choice to put an overall minus sign. So you define this function u such that the change in the value of this function between point A and point B gives you the negative of the work done by the conservative force. In other words, delta u, this is delta u, change in the value of this function equals minus the work done by the conservative force. Notice over here, this w is the work done by the conservative force. It's not the total work done on the particle. Okay. Right, and then we looked at some particular examples of this function. So in particular, I showed you that you can consider for a particle near the surface of the earth, one possible choice of this function is simply mgy. For the spring force, one possible choice of the potential energy function is simply half kx square. For gravitation far away from the surface of the earth or even near the surface of the earth, of course, but this is more convenient to use near the surface of the earth. A convenient choice is, why am I saying that this is a convenient choice rather than just saying that this is the u function? Because the u function, the potential energy is not unique. You can add any constant to u and that won't change anything. Because if you add any constant to u, that won't change the difference in the value of u. So for example, if you add 10 to this number, you add 10 to this number, what did you do with the difference? Nothing. The difference remained exactly the same because that 10 and 10 cancel. Okay. So this function u is not unique. You can always add in a constant. Okay. Another way to derive this function is to say that, okay, I'll calculate the value of this function at different points by first of all choosing a reference point. And I'll say that the value of this function, I can find out the work done by the conservative force in moving from this reference point to any arbitrary point. So if I label this arbitrary point by position vector r and I label my reference point by rp, for example, then I can write down that ur minus urp as in delta u equals the negative of the work done in moving from this point to that point. Or in other words, this is minus the integral from point P to point R of f dot ds. This is nothing other than that applied to the case where your point A is some fixed reference point. Okay? And therefore, you can arrange this to write down that the potential energy function at any arbitrary point no, thank you. The potential energy function at any arbitrary point equals u of rp. You just take this to the other side minus this integral. I mean, don't be scared of this integral. In practice, you just have to do this integral once. This is just an integral from some fixed point to any arbitrary point. That's all it means. Okay, you're integrating force over distance. Anyway, this is just some fixed number. This is the value of the function at that fixed reference point.
it's some number. And you know essentially that you can add any constant to the value of u without changing any physics, okay, because that's not going to change the value of delta u. So we can set this thing to be equal to 0, because this constant, the value of this constant doesn't matter. We might as well set this thing to be the simplest possible number that we can think of, which is 0 in this case, because you're adding over here. Because you have this minus w. ये वाला minus sign. Anyway, ये देखो, delta u equals minus w. Okay? Right? So I am setting this to be equal to 0 because this is a constant number. The value of this number does not matter. So might as well set it to the simplest possible choice. Okay, so once you set it to 0, you then can say that the value of the potential energy function at point r equals the integral from the reference point to the point that you're looking at of f dot ds. You've already seen this in high school without realizing it. How did you define the gravitational potential energy far away from the surface of the earth? U is the potential energy function which you can only talk about if you have a conservative force. Conservative force नहीं है तो आप potential energy की बात ही नहीं कर सकते. Okay? ठीक है? Okay, so you have already seen this in high school. How did you define the gravitational potential energy far away from the surface of the earth? The work done by the gravitational force in moving a particle from infinity to the point at which you are looking at. अब from infinity क्या है? आपका reference point है. Your reference point in that case was set to be at infinity, as in rp आपका उस case में infinity पे है. And you're setting the value of the potential energy at infinity, you set it to be equal to 0. और ये भी आपका इधर ही है, ये देखो ये 0. The value of the potential energy function at the reference point has been set to equal to 0. Okay. Of course, different problems lead to different appropriate choices of your reference point. Some choices are more convenient than other choices. So, for example, far away from the surface of the earth, अगर आपने gravitational potential की function निकालना है, जो कि आपको पता है minus gmm over r आता है, आप कहते हो okay, let me consider it from some fixed point p to some arbitrary point. So then u at the value of the potential energy function at this point equals the negative of the gravitational force dot ds from the reference point, जो कि मैंने arbitrary रखा हुआ है. अभी मैं सोचूंगा कि किधर set करूं reference point to the point at which I'm calculating the potential energy. Then you write down कि okay, the gravitational force is purely radial. So you write down this. ER is of course a unit vector that is pointing radially outward. You have set up your origin of your coordinate system at the center of the earth. ds, well, let's just choose the simplest path. आप simplest path choose करो कि भाई आप पहले purely radial move करते हो फिर tangentially move करते हो. जब आप tangentially move करोगे what's the work done? 0, because your force is radial. So the only contribution to the work done will be due to the radial motion. Just like that. And then you do f dot ds से क्या आएगा आपके पास? So f dot ds in this case will be equal to minus gmm over r square dr. And then the potential energy function at the point that you're looking at equals minus from the reference point का radius to the reference जहाँ आपने calculate करा उसकी value of r minus gmm over r square साथ dr. हाँ नहीं अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि कहाँ सेट करना है. जरूरी नहीं, स्प्रिंग फोर्स के लिए इन्फिनिटी पे नहीं लोगे, दैट्स जस्ट स्टूपिड. ओके ठीक है, आपका स्प्रिंग जो इन्फिनिटली फार अवे हो गया वो हुक्स लॉ वैसे ही ब्रेक डाउन हो जाना है. ओके ओके सो दिस गिव्स यू माइनस माइनस प्लस हो जाता है 1 ओवर आर स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा माइनस 1 ओवर आर. सो यू विल गेट एसेंशियली माइनस जी एम एम 1 ओवर आर minus 1 over rp.
अगेन अगर आप बहुत रिगोरस हो, आप कहोगे सर इस ये R डिफरेंट है इस R से, so you'll be putting a prime over here. If you're careful, it doesn't really matter. अच्छा, anyway, so you have that. This shows you कि भाई कहाँ रेफरेंस पॉइंट आपने सेट करना चाहिए आपको. आरपी की क्या वैल्यू चूज करूं सच के मुझे सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म इस चीज की नजर आए. You set RP to be infinity and you get 1 over infinity to be 0 and you just get minus GMM over R. आप कहीं और भी रेफरेंस पॉइंट सेट कर सकते थे, but then you will always be getting an answer which differs from the answer that you get by setting RP to be infinity by a constant. आपका हमेशा ये minus GMM over R plus GMM over RP आ रहा होता. GMM over RP, remember, is just a constant. You don't worry about any constants that you add to U. That's not going to change your physical results. Okay? So if RP goes to infinity, then you just get that U at R is just equal to minus GMM over R. As in the value of the potential function just depends on the distance that you are away from the center of the earth. Another example, the spring force. आपकी spring force you have your force now, the spring force is, again, if this is my positive x direction, the spring force will be minus kx ex, ds will be equal to dx ex, f dot ds will be equal to minus kx dx, and then so therefore u of r or u of x in this case क्योंकि 1D motion है, u of x will be equal to minus integrating from the reference point to the point that you're looking at minus kx dx. Again, don't confuse this with that, so put the prime over here or integrate करोगे तो क्या आएगा? If you integrate this, what will you get? You get minus k by 2, right? You get plus k by 2, minus minus plus हो गया, plus k by 2 x square minus xp square. What choice of xp leads to the simplest possible u? When xp equals 0. So you choose your reference point to be the point where the spring is neither stretched nor compressed. उधर आप potential G0 का रहे. You declare that the potential energy of the spring block system is 0 when the spring is neither stretched nor compressed. आप हाई स्कूल में भी यही करते हो. Okay, right? So there's a very systematic way of getting this potential energy function. You just need to integrate the conservative force over displacement from a reference point which you choose in an appropriate way ताकि आपको simplest possible answer आ जाए. Okay, you do that, you get your U. Okay, in this course there are basically three cases that you basically have to deal with: gravitational force near the surface of the earth, gravitational force far away from the surface of the earth, the spring force. That's it. Near the surface of the earth तो बिल्कुल ही trivial है, वो खुद से कर लेना. The other two cases I've already done. Okay. So moving on. Now we basically have done the hard part. Let's do one practical example of the application of this work kinetic energy theorem. Okay. A very simple example to begin with, that you have essentially a track, this looping track. Okay, so you essentially a toy car can go into this looping track. It goes here, comes back down, and then completes the loop, and then exits. Okay. Basically, this guy is doing exactly the same thing, except that instead of a toy car, you have an actual human being. So the question is that, okay, how much speed should your, in this case you have a toy car, okay, how much speed should your toy car have such that it completes the loop? Okay, so how much speed at the bottom should it have so that it completes the loop? Let's say that the speed at the bottom is v naught. The first thing that you do is, okay, let's use conservation of energy. If we say that the speed at the top of the toy car, if the speed of that is v, so of course it goes like this. The first thing that we do is, okay, let's apply Newton's second law. As the toy car is moving, so somewhere it's over here, for example, as it's moving,
this angle that the toy car makes with the center of this loop keeps on changing. So that means that it's convenient to use your axis like that. You use that this is my one axis, this is the other axis. There's a radial axis and then there's a tangential axis. Okay. In the radial direction, the forces acting on the toy car are, there's the normal force and then there's the weight. If this angle is theta, then this angle is also theta. So I get that n minus mg cos theta equals आपकी normal force minus mg cos theta equals in this case, nahi, it's moving in a circle. So there must be a component of the acceleration pointing towards the center of your circular motion, which will be equal to mv square over r. R being the radius of this loop. Let me just write it again, क्योंकि आपको पीछे से वालों को नजर नहीं आना. Just because it's not going towards the center of the circle does not mean that acceleration towards the center is zero. Okay, it is moving in a circle, so the direction of the velocity vector is changing, and that changing direction of the velocity vector implies an acceleration towards the center. Okay, so you have, what about the tangential direction? In the tangential case, you have a force minus mg sine theta in the tangential direction. This equals the mass times the tangential acceleration. That's the only force in this tangential direction is mg sine theta, the tangential component of the force. And you can see that as the toy car moves or as this human being moved, theta keeps on changing. So this is a very complicated problem. The forces keep on changing. The normal force, it depends on theta. The component of the weight that you have to talk about depends on theta. The speed depends on theta. So effectively, even though the weight is constant, the weight of this person or the weight of the toy car is constant, this is a variable force problem because theta keeps on changing. The normal force depends on theta. So the total force acting on the toy car or the total force acting on this person keeps on changing. This is a variable force problem. If you have a variable force problem, it's always much easier to tackle it using work and energy. ये normal force इस direction में है, and then along the same axis there's a component of the weight mg cos theta pointing like that. Gravity तो vertically downward है ना, आपकी axis tilted है. Okay. Okay. So that's why अब बार students पूछते हैं सर आपको कैसे पता है न्यूटन्स लॉज नहीं लगानी, इधर वर्क और एनर्जी वगैरह लगाना है आपने. Well, if you are dealing with a problem in which the forces are changing, that's a prime problem to attack using work and energy. Okay, in this case the weight of course of the toy car is not changing, but the total force acting on the toy car keeps on changing because the normal force keeps on changing. ये आपकी टॉय कार है इधर, ये आपकी एक वेट नीचे है, ये आपका नॉर्मल फोर्स नहीं हुआ, ये आपका एंगल थीटा है, ये इसका इस वेट का कंपोनेंट mg का कंपोनेंट along in this direction will be, और इस डायरेक्शन में ये आपकी नॉर्मल फोर्स n. ओके, so far so good. अब इस पे लगाते हैं वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम. The change in kinetic energy, whenever you are applying work kinetic energy theorem or whenever you are applying conservation of energy, always identify two configurations. कि ये initial है और ये final. The work kinetic energy theorem says that the work in going from configuration A to configuration B, total work done, must be equal to the change in the kinetic energy between configuration A and configuration B. Okay, so I say कि जब ये नीचे है, इधर है टॉय कार, that is A, जब इधर आ गए तो that is B. What is the change in kinetic energy between A and B? Change in kinetic energy is always, remember, final minus initial. So kinetic energy at B minus kinetic energy at A क्या आएगा? Half m v square minus half m v naught square.
This is the kinetic energy at B, this is the kinetic energy at A. That's the change in kinetic energy. This must be equal to the work done, total work done on this toy car. Okay? Right? There is no friction acting in this case for the toy car. इसलिए ये problem deal करना कहीं ज़्यादा आसान है compared to वो video वाला problem deal करने से. Video वाले problem में friction is doing significant work. वो जो भाग के जा रहा है वो भाग क्यों रहा है? Because so that friction exerts a forward force on him. And then friction is of course doing positive work. आप भागते हो तो friction does positive work on you. It's friction that leads to your positive increase in kinetic energy. Okay, so that's why this toy car problem is much easier. I can just ignore friction. Assuming that there is negligible friction between the toy car and the track, what's the work done? Well, again, look at the free body diagram. There are two forces, the normal force and the weight. What's the work done by the normal force in moving the car from here to here? The normal force is perpendicular to the track. The car is always moving tangential to the track. Zero. You see, the work done by the normal force is zero because the normal force is always perpendicular to the track. The small displacement vector of the car is always tangential to the track. ठीक है? So that's why वो आपके vector character जब work calculate करो, the vector character of the force is absolutely crucial. Okay? So this must be equal to the work done by the normal force plus the work done by the gravitational force. That's the total work done. There are the only two forces acting. ये निकालने के लिए आपको explicitly integral के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि because the normal force is not a conservative force. इसको आप normal potential energy से नहीं निकाल सकते because there is no such thing as a normal potential energy. इसको आप निकाल सकते हो via the gravitational potential energy. Okay, so this thing anyway is zero, as we just argued by looking at the integral. वो integral में हर term is zero होगी, तो of course the total sum will also be zero, and therefore this thing can be written as in terms of u. इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? Minus delta UG minus the negative of the change in the gravitational potential energy. That's the definition of U. Remember? The work done by the gravitational force is the negative of the change in the gravitational potential energy. And this then is, ये किसके बराबर है? We are dealing with near the surface of the earth, so one possible choice of U is simply mgy. तो मैं कह देता हूँ इधर मेरा y 0 है. तो initial potential energy क्या है? Gravitational potential energy 0, mg times 0. What's the final gravitational potential energy? Mg times 2r. So the change in gravitational potential energy is mg2r. It's always final minus initial. So this equals minus mg2r. And therefore we have that half mv square minus half mv naught square equals minus mg times 2r. That's what you get using the work kinetic energy theorem. The change in kinetic energy on the left hand side equals the work done by the gravitational force. The work done by the normal force is 0. And we have found out the work done by the gravitational force. Instead of integrating the gravitational force along this weird curved path, you have said, well, gravitational force तो वैसे ही conservative force होती है. Might as well just use the gravitational potential energy. हाँ. क्योंकि as it moves, normal force देखो perpendicular है, displacement vector क्या है? Tangential. तो दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा? Cos of 90 degrees क्या होता है? Remember work done में वो dot product आता है. इस केस में आपका सेंट्रीपिटल फोर्स इज n माइनस mg cos थीटा. तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन कर रहा है. देयर इज नो मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ टुवर्ड्स द सेंटर. कौन कहता है? आपकी एकेडमी कहती होगी, मैं तो नहीं कहता होगा.
Okay, if you're moving in a circle, you're not even moving towards the center of the circle, तो work done towards the center कैसे हो गया? I mean, it's as simple as saying कि भाई आपके normal force is perpendicular to the circular path. The toy car is always moving tangential to the circular path. तो n dot ds क्या होगा? Zero. जब n dot ds zero है तो integral क्या होगा? Zero का zero. You're just adding bunch of zeros, okay? अच्छा, anyway. ओके अच्छा, अब आप कहो कि भाई V नॉट मैंने निकालना था, अब आपका V क्या होना चाहिए? अब एक पहली गैस होगी कि भाई सर ये तो तब क्रॉस, ये देखिए ये आपका जो है ना, जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी स्पीड कम होती जाएगी. अगर आपने लूप कंप्लीट करना है, इधर इसकी स्पीड बिल्कुल थोड़ी सी है तो ये लूप कंप्लीट कर लेगा. आहिस्ता आहिस्ता करके आएगा, आहिस्ता आहिस्ता करके, और फिर जैसे ही इधर आएगा बिल्कुल आहिस्ता मूव कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा आगे मूव करेगा उसके बाद तो इट विल अगेन पिक अप स्पीड. सो इट विल बी एबल टू कंप्लीट द लूप. So if you say कि भाई V0 है, V0 है, what will you get? You'll get minus half m V naught square equals minus mg times 2r. And therefore m and m cancels, minus minus cancels, and you get that V naught is equal to square root of 4gr. If you do this experiment, क्योंकि आप पहली गैस आपकी ये है कि भाई इसने अगर लूप कंप्लीट करना है, इधर बेयरली बस पहुंच जाए, उसके बाद तो आगे तो उसने खुद ही कंटिन्यू करके वापस नीचे आ जाना है. Okay, that's why you're taking to be zero. You're not taking to be exactly zero, you're just taking to be a very very small number. Okay. अगर if you do the experiment, it turns out कि अगर ये आप initial speed दो टॉय कार को, ये remember this is a speed over here. जिस स्पीड से आपने टॉय कार ने एंटर हुई है लूप में, इफ यू गिव इट दिस स्पीड, टर्न्स आउट कि टॉय कार पहले से गिर जाती है, नहीं लूप कंप्लीट करते. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. जितनी मर्जी आप ग्रीस लगाते रहो, उसको चाटते भी रहो ट्रैक को, इट डजंट कंप्लीट द लूप. ओके, सो व्हाई इज दैट? वेल थोड़ी सी ज्यादा, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4gr से थोड़ी सी ज्यादा करो तब भी गिर जाती है. उस वैक्यूम में भी कर लोगे फिर भी गिर जाती है. या लेकिन उसमें क्या लॉजिक में फर्क है. और देखो अगर टॉप पे रुक गई है, अगर सपोज करो एक मून आपका अचानक रुक जाए, मून को क्या होगा? तो ये टॉप पे देखो रुका हुआ है, ऑलमोस्ट रुका हुआ है टॉप पे, क्या होगा इसको? नीचे गिर जाएगा. दैट इज ऑब्वियस. मून क्यों नहीं गिरता नीचे? बिकॉज इट इज ऑलरेडी मूविंग. यू नीड दिस टॉय कार टू बी ऑलरेडी मूविंग सो दैट इट डजंट फॉल डाउन, अदरवाइज ये नीचे गिर जाएगा ऑफ कोर्स. हाँ, वो कार को मैंने ऑलरेडी कर दिया ना, इट्स ऑलरेडी मूविंग. यू नीड अ फोर्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, यू डोंट नीड अ फोर्स फॉर मोशन. ओके, वो ऑलरेडी इधर जो है, ऑलरेडी जो है मैंने इधर थोड़ा सा रफ सरफेस है जहां से मैंने स्टार्ट किया कार, उधर से मूव करना शुरू हो गया. ओके, हाँ हाँ, एक दफा पुश कर. वंस यू हैव गिवन इट अ पुश, आपका हाथ नहीं टच कर रहा है टॉय कार को. ओके ओके, सो यू नीड द टॉय कार टू बी मूविंग. इधर उसकी स्पीड जीरो नहीं चाहिए आपको, क्योंकि इधर स्पीड बहुत छोटी है, ये ऑफ कोर्स नीचे गिर जाएगी. तो कितनी स्पीड आपको चाहिए फिर? कैसे निकालोगे? वेल, यू हजरत न्यूटन के पास जाओ ना. You go draw the free body diagram at the top. Let's see what's happening at the top. At the top, आपका ये है सिचुएशन. There are two forces acting. एक आपकी नॉर्मल फोर्स है. नॉर्मल फोर्स नीचे की तरफ क्यों है इस केस में? नीचे की तरफ होगी नॉर्मल फोर्स, ऊपर की तरफ होगी? नीचे की तरफ क्यों होगी? नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ. सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स नहीं है. सेंट्रीपिटल फोर्स इज जस्ट द नेम गिवन टू द टोटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर. नहीं, ये सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है. दिस प्लस द वेट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स.
Well, essentially because the normal force is always a pushing force. आप ये जो टॉय कार है आपकी सरफेस को पुश कर रही होगी, पुल नहीं कर रही होगी. This toy car is pushing the surface in that direction, and therefore the surface is pushing the toy car in this direction. अगर आप ये जो टॉय कार इस सरफेस के ऊपर अगर फोर्स लगा रही हो नीचे की तरफ, फिर आपकी ये फोर्स बनती ऊपर की तरफ बाय न्यूटन साइड लॉ. लेकिन अगर ये टॉय कार सरफेस को नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, फिर तो पुल कर रही है सरफेस को. नो सरफेस कैन डू दैट. Okay, so therefore this force must be like that, and then of course the weight is acting downwards, and therefore I can write down that n plus mg equals mv square over r, where v is the speed at the top. अब इसको इस्तेमाल करके, ये ऑलरेडी काइंड ऑफ मैंने लिखा था, जो पहले मैंने लिखा था. ये देखो, इसमें थीटा में कौन से थीटा अगर मैं 180 डिग्रीज डालूं तो क्या आता है? थीटा अगर मैं 180 डिग्रीज डालूं, जो कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज कोरस्पॉन्ड्स टू दिस पोजीशन, तो क्या आता है? n cos of 180 डिग्रीज इज माइनस, सो यू गेट n प्लस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r. ये तो मैं ऑलरेडी लिख चुका था एक्चुअली, कोई नई चीज मैं नहीं लिख रहा. ओके, सो हाउ डू आई फाइंड v फ्रॉम दिस थिंग? वेल, आपके पास कंस्ट्रेंट है. You must always have the situation in which the normal force is pointing in this way. Which means के in this equation what should be the value of n? n पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए? नहीं, पॉजिटिव होगी इस केस में. ये देखो, मैंने इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है जब मैंने इक्वेशन लिखी है. That means the normal force, if normal force is always a pushing force, it should always point like this. अगर मेरी नॉर्मल फोर्स नेगेटिव बन गई है, that means the normal force is pointing like that. Which means के this is a physically impossible situation. If Newton predicts that you have a physically impossible situation, what will happen? That thing will never happen. Okay, if you have something that is that violates Newton's second law, that thing is not going to happen. Okay, so you have over here a normal force आपकी है जी mv square over r minus mg, and you want this normal force to be always be positive or equal to 0. It can never be less than 0 because the normal force being less than 0 implies कि normal force ऊपर की तरफ है. But that will imply कि ये normal force जो है pushing force रह ही नहीं गई, ये pulling force बन गई है. The normal force cannot be a pulling force, इसलिए आपकी normal force ऊपर की तरफ हो ही नहीं सकती. हाँ, that's a limiting case बिल्कुल. अगर normal force 0 है तो it's just able to cross. Okay, that's a limiting case. Okay, इसलिए वो greater than equal to लिखा. So you have the over here mv square over r should be bigger than equal to mg. M and m cancels and v square should be greater than equal to gr. यानी कि आपको कम से कम v square जो है कम से कम gr के बराबर चाहिए आपको at the top. You don't want v to be 0 at the top, you want v square to be at least be equal to g times r at the top. तो इधर अब वापस जाओ और अब आप कहो कि भाई ओके, इधर मैंने गलती की थी. I need this v square to not be equal to be 0. I need this thing to be equal to g times capital R. और इसके बाद फिर क्या आ रहा है? हाफ m gr minus half m v naught square equals minus mg times 2r. Now I'm back to conservation of energy या work kinetic energy theorem. ये जो है m and m cancels हो जाता है throughout of course. This goes to the other side to give you, ये देखो इधर हाफ है, प्लस हाफ है, उधर माइनस 2gr है, इधर माइनस हाफ, इधर प्लस हाफ gr है. तो उस साइड पे जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस 5/2gr. So you'll get over here, essentially अगर मैं इधर आ जाऊं, माइनस हाफ v naught square equals minus 5/2gr. Minus minus cancels, half cancels, and you get that v naught square should be equal to, आपको v naught जो चाहिए आपको 4 square root of 4gr नहीं चाहिए, आपको square root of 5gr चाहिए. इसलिए your toy car kept on falling down. Okay, अगर आपका बंदा है
You can find out कि बंदे की टॉप पे क्या स्पीड हो, वो वीडियो में उसने किया भी था कैलकुलेशन. What should be the speed of the person be in this video at the top of the loop? Well, again, at the top of the loop, ये टॉय कार की बजाय अब बंदा है. It's exactly the same thing. At the top of the loop, the forces acting on that man are n plus mg. This must be equal to mv square over r. And therefore, you have that the normal force is simply equal to mv square over r minus mg, and this should be bigger than equal to 0. And therefore, v should be bigger than equal to square root of gr. इसलिए वो वीडियो में उसको बता रही थी कि भाई इतनी स्पीड तुम्हारी टॉप पे होनी चाहिए, otherwise you will fall down. Okay, that particular value of course depends on the radius of the loop that they have constructed. But before doing another one, abhi jo problem, the problem that we just attacked, we can recast it in another way. The work was equal to the change in the kinetic energy. Okay, things se likh lete hain. The work done equals the change in kinetic energy. And the work done was equal to, in this case, the only work done was being done by the gravitational force. So I can write the work done by the gravitational force as the negative of the change in the gravitational potential energy. अब इसको देखो जरा. I can bring this delta UG to the other side. And what do I have? The change in the kinetic energy plus the change in the gravitational potential energy equals, और ये क्या है? Conservation of energy. Yes, I know 0, 0 ही है, okay? But this is conservation of energy. If I say that the total energy is the sum of the kinetic energy and the gravitational potential energy, that number doesn't change. Okay? Right? So that's essentially how conservation of energy comes about. You write down the total work done in terms of potential energies as far as possible, और फिर you take the potential energy to the other side. Notice कि इधर माइनस साइन क्यों अब हमने डाला था? क्योंकि अगर इधर माइनस साइन ना हो तो फिर आपके पास आता कि change in kinetic energy minus the change in the gravitational potential energy equals 0. As in the difference in energies remains constant. People don't like to deal with differences, इसलिए उन्होंने वो potential energy की definition के अंदर एक माइनस साइन घुसाया हुआ है, so that you get the statement at the end of the day that the sum of energies does not change. Okay, let's do another problem. You have an inclined plane theta. आपका एक ब्लॉक है of mass m. There is some friction between the block and the inclined plane. You shoot this block up with some speed v0. This block goes up, up, up. It eventually comes to a stop over here. You are supposed to find out the distance moved up the incline by the block. Of course, you can do this using Newton's second law as well. You first find out the acceleration down the slope of the block. You know the initial speed of the block. You use that to figure out the distance moved by the block. Let's do it using conservation of energy or the work kinetic energy theorem. What are the forces acting on your block? There's the weight, there's the normal, and there's the friction down the slope. Why is friction force down the slope? Because the slope is at rest. Relative to the slope, the block is moving up the slope, and therefore friction always opposes relative velocity, so the friction force will be down the slope. Okay, the total work done will be equal to the change in the kinetic energy of the block. This is configuration A, this is configuration B. What's the change in the kinetic energy from A to B? ये इधर 0 है, इधर रुका हुआ है ये. 0 minus half m v0 square. So you get minus half m v0 square must be equal to the total work done on this block. What are the forces acting on the block? Normal force, weight, friction force. What's the work done by the normal force? 0.
the normal force is perpendicular to the displacement of the block. So the work done by the normal force plus the work done by the friction force plus the work done by the gravitational force. The work done by the normal force is 0. What's the work done by the friction force? उसको निकाल लेते हैं. But what's the work done by the gravitational force? This I can write as minus delta UG. The negative of the change in the gravitational potential energy, and therefore I can write down that the change in kinetic energy plus the change in the gravitational potential energy equals the work done by the friction force. आपकी एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कम होगी. आपको पता है ये हाई स्कूल से. क्यों कम होगी? बिकॉज सम ऑफ इट गेट्स ट्रांसफर्ड टू इंटरनल एनर्जी. है याद आया? इंटरनल एनर्जी किधर से आती है? बिकॉज ऑफ द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स. Whatever work is done by the friction force, that is precisely the change in internal energy. जितना फ्रिक्शन ने वर्क किया है उतने ही वो सरफेसेस गर्म हो जाएंगे essentially. Okay, so next we have to find out this. ये किसके बराबर होगा इस केस में? If this goes up a distance h, so that I have this triangle, ये s है, ये h है, ये theta है, then the work done by the gravitational force, this delta UG किसके बराबर होगा? Delta UG plus mgh होगा. Final gravitational potential energy ज़्यादा है. Okay, so you find out that minus half m v naught square plus mgh equals the work done by the gravitational force. What's the work done by the gravitational force? Well, the friction force is down the slope, the displacement vector is up the slope. As the block slides, the friction force is constant. The friction force is always equal to mu times n in this case. What's n in this case? Mg cos theta. What's the friction force then? Mu mg cos theta. What's the work done by the friction force then? Minus mu mg cos theta times s. Okay, so you get minus mu mg cos theta times s. That's the work done by the friction force. And you can use this to figure out h or s, क्योंकि आपको पता है कि from here sin theta is equal to h over s, and therefore h is equal to s sin theta. You plug this thing over here, just solve for s. Okay, you have the distance moved up the incline. And कौन सा cos theta वाले का? Friction is acting down the slope. आपका ये जो एंगल है ये थीटा है, ये आपका mg cos theta है. तो normal force in this case will be equal to mg cos theta. Therefore the friction force will be mu mg cos theta. Mu times n होगा ना friction force. Mu mg cos theta, and therefore the work done by the friction force will be mu mg cos theta times s. But the friction force is down, the displacement vector is up, so hence the minus sign. Okay, right? So in a general situation, if I have a bunch of forces acting, the work done is equal to the change in kinetic energy. If the total work done is the change in kinetic energy, if I have, for example, the gravitational force, the elastic force, and friction, I can then write this as Wg plus the elastic force plus this I can write as minus delta Ug. This I can write as minus the negative of the change in the elastic potential energy. I can write this as nothing. Let it remain as it is, okay? इसको मैं निकालना पड़ेगा मुझे depending on situation to situation. Friction is not a conservative force, so you actually have to do the integral over here. Doing the integral may be trivial, of course. इस तरह इस केस में trivial था. The work done by friction force was very simple to calculate, okay? So, क्या चीज? जब आपकी फ्रिक्शन फोर्स चेंज करती जाएगी. जैसे मैं कहूं कि भाई दो सरफेसेस हैं
और सरफेस जो रब हो रही हैं वो चेंज होती जा रही हैं, उनका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. Okay, so you have delta KE plus delta UE plus delta UG equals the work done by the friction force. अब फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क डन है वो किधर गया है, किस एनर्जी में गया है वो, इंटरनल एनर्जी. All the work done by the friction force went into increasing the internal energy. Into, for example, over here, ये जब डब्बा ऊपर गया फ्रिक्शन की वजह से डब्बे को क्या होगा, गर्म हो जाएगा. The work done, when the work done by the friction force is negative, what's the change in the internal energy? Positive. आपका negative work done by friction force implies a positive change in the internal energy. So you can write this thing as minus the change in the internal energy. And therefore, you can write down that the change in kinetic energy plus the change in elastic potential energy plus the change in the gravitational potential energy plus the change in the internal energy equals, क्योंकि ये ब्लॉक देखो ऊपर जा रहा था ना, the work done by friction was negative ही आएगा ना, and that leads to an increase in internal energy. यानी कि डेल्टा इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव व्हेन द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज, इसलिए माइनस डाला अब इन मैग्नीट्यूड. ओके, सो दैट इज योर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ऑफ कोर्स जरूरी नहीं द ग्रेविटेशन फोर्स इलास्टिक फोर्स होंगे, अगर कोई और कंजर्वेटिव फोर्सेस है तो उनकी कोरेस्पॉन्डिंग डेल्टा यू लिख दो. As in the total energy, which is defined as the kinetic energy plus the sum of all the relevant potential energies plus the internal energy, the total change in this number must always be equal to 0. Okay, तो आप बेशक ये इस्तेमाल कर लो. You don't, then once you have formulated this, you don't need to go back to the work kinetic energy theorem. So for example, ये जो loop वाला problem था जो हमने किया, इधर मैं कर देता हूं दोबारा. ये आपने ऑफ कोर्स यू नाउ फील मोर एट होम विद रेड स्पॉट एंड योर एकेडमी. आपके ये एकेडमी वाले तरीके पे मैं वापस आ गया हूं ताकि आप परेशान हो कि सर जी ये क्या हो रहा है. ये आपका ए है, ये आपका बी है. व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट ए? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, रिमेंबर, क्योंकि इधर हमने कहा था स्पीड वी नॉट है, इधर स्पीड वी है. व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट बी? Equals half mv square. If I say that over here y equals 0, what is the gravitational potential energy at A? Yeah, thank you. What is the gravitational potential energy at B? mg times 2r. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आप अप्लाई करने के दो तरीके हैं, गौर से सुन लो. क्या इन प्रैक्टिस, either you say that the energy at A equals the energy at B. So in that case you will write down that half m v naught square plus 0 equals half m v square plus mg times 2r. आपने एक किस्म के वो अपने जो काउंट बैलेंस है वो यू हैव टू चेक दैट. ओके, क्योंकि पैसे ना गए हैं ना आए हैं. एक तरीका यह है कि पैसे अभी देखो और बाद में देखो कितने पैसे, अगर मैच करते हैं अल्लाह खैर सल्लाह. ओके, अनदर वे इज टू लुक एट के टोटल चेंज कितना आया पैसों में. इफ द टोटल चेंज इज 0 देन यू आर फाइन. ये कौन इतनी शोर मचाई जा रहा है, चुप करो यार. अच्छा, ओके, so another way to apply, this is one way to apply conservation of energy. Total energy at A equals the total energy at B. Another way is to look at the changes in energy instead. The total change in the energy should be 0. तो आपका आ जाएगा कि the change in the kinetic energy is half m v square minus half m v naught square. The change in the gravitational potential energy is mg times 2r. This thing plus this thing should be equal to 0. Of course, it's the same thing. I personally always prefer the second way. But that's a pretty subjective choice. अगर आपको prefer करते हो कि पहले तरीके से अपनाना, okay, that's fine. Okay. It's just a matter of how you apply conservation of energy.
बोर्ड ऊपर कर दूं? ये क्या कोई रोशनी का कमाल हो रहा है इधर? ये इधर? अरे तो आप बहुत पहले चले गए हो क्या? मैं तो इसको वो कहानी सुना के कहीं का कहीं निकल गया हूं। अब आपको होश आई है कि कुछ लिखा था सर जी ने। ओके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल 0। ओके, चलो अब एक प्रॉब्लम करते हैं। आई टेक अ पेंडुलम। ये पेंडुलम बॉब जो है इज हैंगिंग फ्रॉम a string. The size of the bob is negligible. Okay, I've just drawn it for illustration purposes. इसको मैं एक हथौड़ी से मारता हूं बॉब को। I hit this bob hard so that it starts moving with speed v0. What value of v0 do I need such that कि ये बॉब जो है पूरा एक वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले, ताकि ये वापस आ जाए? What value of v0 do I need? Again आप कहोगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सर्दी लगाते हैं। इधर मैं कहता हूं कि y 0 है। The kinetic energy over here, this is A. When the bob is up top, this is B. What's the kinetic energy at A? कितना? हाफ m v0 square. और यार मैंने v0 कह दिया ना, ओके v0. What's the gravitational potential energy at A? Why are you not? आप कहोगे सर कि एक और टेंशन फोर्स भी तो लग रही है ना, इसका वर्क डन तो आपने कंसीडर नहीं किया। क्यों नहीं कंसीडर किया? आप करो तो गलत करते हो, क्योंकि इस केस में द वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स इज 0। वंस अगेन द टेंशन फोर्स इज रेडियल, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज टेंजेंशियल। द वर्क डन बाय टेंशन फोर्स वैसे ही 0 होना है। You don't need to calculate the work done by this non-conservative force, the tension. Remember, आपने वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से आया है ये सारा। आपने कभी हाई स्कूल में नहीं सोचा था? ऑफ कोर्स नहीं सोचा था। यही प्रॉब्लम आपने करते थे। ये जो पैसिफिक वालों को जो ए लेवल वाली बुक्स हैं, रेड स्पॉट में शायद नहीं है, इसलिए आपने नहीं देखा होगा। आप तो डायरेक्ट पास पेपर सॉल्व करने बैठ जाते हो। क्या इट्स देयर, is there in many different A level books. This exactly same problem कि पेंडुलम बॉब की कितनी स्पीड नीचे हो सच के पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले। इसमें आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिंपली ब्लाइंडली लगा देते थे ए लेवल में, भाई इधर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इधर क्या है, इधर काइनेटिक एनर्जी क्या है, इधर क्या काइनेटिक एनर्जी है। दैट्स इट। यू नेवर वंडर्ड कि भाई टेंशन का क्या इधर रोल है। वेल, टेंशन का रोल है एज फार एज चेंजिंग द एक्सप्रेशन इज कंसर्न्ड, but the work done by the tension force in this case is 0, because the tension force is always radial, the displacement is tangential. Okay, so you then say that okay, what's the gravitational potential energy at B? वो क्या होगी? mg times 2r. Thank you. And what's the kinetic energy at B? हाफ m v स्क्वायर उसके कहते हैं ये। अच्छा, अब if the bob is barely able to complete the loop, ये किसके बराबर होनी चाहिए? Okay, yes, assuming कि आपका भी 0 आ रहा है एग्जाम में, so you have that this thing equals, नहीं वो मैं दोबारा जोर नहीं लगा रहा। so now apply conservation of energy to get कि भाई v0 की क्या वैल्यू होनी चाहिए। So change in kinetic energy is 0 minus half m v0 square. That's the change in kinetic energy. Plus the change in the gravitational potential energy is mg times 2r minus 0. And this must be equal to, आप ऐसे ही 0 कह देते हो, जब भी मैं कोई सवाल का आंसर 0 ही होता है। ओके, change in the kinetic energy plus the change in the gravitational potential energy equals the total change in the energy, which should be equal to 0. In this case friction कोई नहीं है, the work done by the tension force is 0. okay, right. तो इधर से आ जाता है मेरे पास जनाब हाफ m v0 square equals mg times 2r, और ये देखो ये 4 बन गया, m और m कट गया, और फिर क्या आ गया, v0 is equal to square root of 4gr। पहचाना?
अभी तो आपने देखा था इसको वही टॉय कार वाले प्रॉब्लम में जो कि गलत था, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये भी गलत है। इतना लंबा मैंने प्रॉब्लम भी करवाया था, बताया भी था गलत है, उसी किस्म का उसको छोटा भाई सॉल्व किया फिर गलत कर दिया। ओके, आई मीन फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। ओके, फूल मी थ्राइस अब कर देता हूं। ओके, फिर पता नहीं क्या कहूं मैं। ओके ओके, ये क्यों गलत है? Exactly, because the tension force, if this barely completes the loop, the tension force is no longer a pulling force. इस केस में आपको टेंशन फोर्स हमेशा एक पुलिंग फोर्स होनी चाहिए। If you look at the bob at the top, आपकी टेंशन फोर्स नीचे की तरफ है, आपका वेट नीचे की तरफ है। टेंशन फोर्स नीचे की तरफ क्यों है? क्योंकि पुल कर रहा है ना, स्ट्रिंग उसको पुल कर रही होगी। अगर आप स्ट्रिंग की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, टॉप एंड पे अगर ये टेंशन का फोर्स, ये दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब, व्हाट्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द स्ट्रिंग? ऊपर की तरफ। और फिर इधर जो जिधर से आपने ये बांधी हुई है स्ट्रिंग को, उसकी तरफ नीचे की तरफ फोर्स लग रही होगी। ये देखो खिंचाव में है ये स्ट्रिंग, आपकी स्ट्रिंग या रोप्स हमेशा खिंचाव में होंगी। दे विल बी इन टेंशन, दैट्स व्हाट द वर्ड टेंशन लिटरली मींस। आपकी सर का दर्द को नहीं रेफरेंस कर रहे वो, दे आर सेइंग दैट द रोप इज बीइंग पुल्ड फ्रॉम बोथ एंड्स, टेंशन में है वो। ओके, अगर इफ दिस फोर्स वाज एक्टिंग अपवर्ड्स, इफ दिस टी वाज अपवर्ड्स, ये वाली फोर्स नीचे की तरफ होती तो स्ट्रिंग को क्या होता? उसी वक्त बकल कर जाती, टेंशन में तो होती ही नहीं। इफ द स्ट्रिंग बकल्स, द होल थिंग फॉल्स डाउन, द बॉब इमीडिएटली कोलैप्सेस, इट इमीडिएटली फॉल्स डाउन। आपकी स्ट्रिंग टेंशन में नहीं रहेगी। हाँ, क्या ठीक लग रहा है? ये गलत है, क्योंकि आपकी बॉब जो है उसकी स्पीड टॉप पे जीरो नहीं हो सकती। अगर जीरो होगी स्पीड, वो उसी वक्त नीचे गिर जाएगा। नहीं, वो ठीक है, उस इंस्टेंट पे आपकी जो मसला ये होता है, आपकी स्ट्रिंग जो है ना वो स्लैक हो जाती है। मैं अभी करके दिखा देता हूं आपको। ओके, यू कैन कैलकुलेट द टेंशन, और उस वक्त स्लैक हो जाती है आपकी। लेट्स कैलकुलेट द टेंशन, ठीक है, एट द टॉप। सो ये बिल्कुल ठीक है, दिस इज परफेक्टली फाइन। T प्लस mg विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r, वेयर v इज द स्पीड एट द टॉप, और फिर इधर से टेंशन आ रही है आपकी mv स्क्वायर ओवर r माइनस mg। तो अगर स्पीड आपकी टॉप पे जीरो है, टेंशन क्या आई है? नहीं, माइनस mg, जिसका मतलब है आपकी टेंशन इस डायरेक्शन में नहीं है, जिसका मतलब आपकी टेंशन ऊपर की तरफ है, जिसका मतलब है स्ट्रिंग पे टेंशन की क्या फोर्स है डायरेक्शन का? नीचे की तरफ। तो अब स्ट्रिंग बकल नहीं कर गई। ओके, यू नीड दिस थिंग टू बी ऑलवेज पॉजिटिव, ताकि ये टेंशन ऑलवेज रिमेन्स अ पुलिंग फोर्स। अनबिलीवेबल कि आपने ए लेवल किया और ये नहीं आपको चीजें पता हो गए। ओके, सो mv स्क्वायर ओवर r शुड बी बिगर देन इक्वल टू mg, एंड देयरफॉर v स्क्वायर शुड बी बिगर देन इक्वल टू gr। पहचाना? That's the beauty of physics, okay? कि इतना different, seemingly so much different problems have exactly the same solution. आपको जो आप कहते हो कि यूनिफाइंग किस्म के फिजिकल प्रिंसिपल्स हैं, that's one demonstration of that. आपको इधर टॉप पे जो है वो आपको जीरो नहीं चाहिए, आपको हाफ m gr चाहिए। तो ये डालो इधर हाफ m gr, इसको फिर दूसरी साइड पे लेके जाओ, या इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 5/2 mgr, और फिर इधर आएगा मैं इतना हलवा नहीं देने लगा आपको एग्जाम में। ओके, अगेन द पॉइंट वुड बी कि आप इसको समझो कि क्यों ये हो रहा है सब कुछ। ओके